Now children, today let's start with chapter number 7, that is the frigid zone. So in this chapter we will study about frigid zone. So on the earth there are two frigid zones, one found on the northern hemisphere and next to the southern hemisphere. Right? So northern frigid zone होती है वो आपकी नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्कल पे होती है और southern frigid zone आपकी एंटार्क्टिक सर्कल टू साउथ पोल होती है. Right? So we can say that northern and southern limits are the north and south pole respectively. ठीक है, ये किससे कवर्ड होती है? दे आर कवर्ड विद आइस एंड द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्टिनेंट इज एंटार्क्टिका. क्योंकि ये कहाँ लाया करता है? साउथ फ्रिजिड जोन में. इसको हम फ्रोजन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. ठीक है, सो दिस रीजन अराउंड द पोल्स आर अनइनहेबिटेड ड्यू टू सीवियर कोल्ड एंड लैक ऑफ वेजिटेशन. लार्ज पार्ट ऑफ कनाडा, अलास्का, कोस्टल ग्रीनलैंड, आइसलैंड, साइबेरिया के हम अंडर दिस रीजन, जिसमें आपका इंडिया होता है, दे हैव सेंड एक्सपीडिशन टू दीज रीजन फॉर एक्सप्लोरेशन. राइट, यहाँ पे हमारा एक ये जो वाला पार्ट हो गया आपका, दिस इज योर फ्रिजिड जोन. व्हाट वी कॉल इट? दिस इज योर फ्रिजिड जोन. राइट, नेक्स्ट इज क्लाइमेट. सो वी कैन से बोथ द फ्रिजिड जोन आर लोकेटेड फार फ्रॉम द इक्वेटर. दे रिसीव ओनली स्लैंटिंग सनरेज. देखो जो सनरेज होती है वो स्लैंटिंग पड़ती है, डायरेक्ट नहीं पड़ती है. राइट, सो द स्लैंटिंग रेज आर सो फेवर दैट दे आर नॉट एबल टू इवन वार्म द लैंड. जो लैंड होता है वो वार्म ही नहीं हो पाता है. Right, so we can say that the temperature drops up to -40°C. Summers are hardly for 2 or 3 months. So we can say temperature rise करता है 3°C to 12°C and there is very scanty rainfall. जो rainfall होती है वो 15 to 30 centimeter होती है. Throughout the summer, the snow melts and the ice caps in the Arctic and Antarctic remain intact. So if we talk about in summer, polar region क्या witness करता है? Continuous daylight and even at the midnight also. Right, in June when the north frigid zone get continuous sunlight, जो dark southern वाला है वो क्या एक्सपीरियंस करता है? वहाँ पे continuous night होती है. नॉर्दर्न में continuous डे हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है साउथ में क्या हुआ? continuous डे. At the time the sky is lit up with aurora borealis in the northern frigid zone and aurora australis in the southern frigid zone. These are the natural occurring bright lights. ये आपको commonly night में दिखाई देती है आपके polar region में. If we talk about plant life, so the soil in this region is permanently frozen except in summer season. So hardly we can say any plants or crops grow and survive here when the snow melts during the summer. कुछ shrubs होते हैं जैसे mosses हो गए, lichens हो गए, grass हो गए, वो grow करते हैं. And we have some flower bearing plants and berry bearing shrubs जैसे आपके cranberries हो गए, blueberries हो गए और आपके wild currants हो गए. A few vegetables are grown by the inhabitants for personal consumption. Right, it is impossible for tree to grow in this region. बहुत impossible हो जाता है. That's why the trees do not grow in this region. If we talk about animal life, some animals have adapted themselves to excessive cold. जैसे आपका polar bear हो गया, right, caribou हो गया, reindeer, musk ox, deer, fox. ये क्या है आपके इस वाले climate में भी survive कर जाते हैं. They all withstand the excessive cold due to thick white covering of fur on their body. When the snow melts, this covering changes its color from white to grayish brown. The change of color camouflages them at various times of the year. In addition to these animals and birds, there are plenty of fish, seals, walrus, and whales that have been inhabited over here. Right? Human life. Life is very difficult and harsh in this region. Very few people live here. यहाँ पे आपको इनोइट्स या फिर एस्किमोस देखने को मिलेंगे. Their main occupation includes trapping and hunting of animals, herding of reindeer, catching of fish like salmon and Arctic char. Insects are called Eskimos. They used to live in the houses. जो किसके बने हैं? Block of ice के. Such houses are called igloos. They are used to hunt seals, whales and walrus. और ये किसका यूज करता है? हार्पून का. हार्पून क्या? इट्स अ स्पीयर जहाँ पे लेदर रॉक अटैच्ड होती है. They also use bows and arrows made up of wood and whale bone. They hunted sea animals. वो sea animals को क्या करते हैं? Hunt करते हैं. But now the situation was changed. Inuits have started using rifle. अब उन्होंने rifle का यूज करा instead of harpoons to hunt animals. They prefer living in permanent wooden houses instead of igloo. Other tribes of frigid zone include Lapps in the northern part of the Scandinavian and Samoyeds, Yakuts and Chukchis in Siberia. These are the different people that you see that are included in this group. Right? This is all in this chapter. Hope you understood each and everything. Now we will meet in next class. Thank you.